Our guest of honor for today, Honorable Mr. Justice Vijay Bishnoi, Judge Supreme Court of India, is amongst us. His august presence elevates this moment, lending profound inspiration to our collective pursuit of strengthening justice delivery. Welcome, Lordship. Honorable Mr. Justice Vijay Bishnoi, Judge Supreme Court of India, Honorable Mr. Justice Sanjeev Prakash Sharma, the Acting Chief Justice, Rajasthan High Court and Patron-in-Chief, Rajasthan State Judicial Academy, Honorable Dr. Justice Pushpendra Singh Bhati, Judge, Rajasthan High Court and Chairman, Rajasthan State Judicial Academy, Honorable Mr. Justice Vineet Kumar Mathur, Judge, Rajasthan High Court and Co-Chairman, Rajasthan State Judicial Academy, Honorable Judges of the Rajasthan High Court, respected Registrar General and esteemed officers of the Registry, respected Director and other officers of Rajasthan State Judicial Academy, distinguished guests, and our beloved trainee officers. A very good morning to everyone. On behalf of Rajasthan State Judicial Academy, I extend a warm and heartful welcome to this auspicious inaugural ceremony of the RJS Induction Training Program for Batch 2026-27. Today marks the beginning of a remarkable journey of our newly inducted trainee judicial officers, a journey of learning, responsibility, and service to justice. To commence this solemn occasion with respect and patriotic spirit, may I now request everyone to kindly rise for Vande Mataram.
Knowledge dispels darkness, and wisdom illuminates the path of justice. To invoke the spirit of learning and righteousness, we shall now proceed with the lighting of the ceremonial lamp ceremony. For this, I most respectfully invite the honorable dignitaries on the dais to kindly come forward for this ceremonial lamp lighting. Thank you, Your Lordships. In the rich cultural heritage of Rajasthan, the ceremonial safa stands as a symbol of honor and dignity. The presentation of a planter beautifully signifies growth and the nurturing of enduring values, ideals that resonate deeply with the spirit of judicial service. We shall now proceed with the ceremonial felicitation of the honorable dignitaries through the presentation of safa and planter. For this, I most respectfully invite Honorable Mr. Justice Sanjeev Prakash Sharma, the Acting Chief Justice, Rajasthan High Court and Patron-in-Chief, Rajasthan State Judicial Academy, to kindly present the ceremonial safa to Honorable Mr. Justice Vijay Bishnoi, Judge, Supreme Court of India. May I now most respectfully invite Honorable Dr. Justice Pushpendra Singh Bhati, Judge, Rajasthan High Court and Chairman, Rajasthan State Judicial Academy, to kindly present a ceremonial safa to Honorable Mr. Justice Sanjeev Prakash Sharma, Acting Chief Justice, Rajasthan High Court. Thank you, Your Lordship. I now request Mr. Balkrishna Mishra, Director, Rajasthan State Judicial Academy, to kindly present the ceremonial safa to Honorable Dr. Justice Pushpendra Singh Bhati, Judge, Rajasthan High Court and Chairman, Rajasthan State Judicial Academy. I also request Dr. Chetna, Additional Director, Administration, RSJA, to kindly present a planter to Honorable Dr. Justice Pushpendra Singh Bhati. Thank you, ma'am. I now invite Mr. Narendra Kumar Khatri, Additional Director, Academics, Rajasthan State Judicial Academy, to kindly present the ceremonial safa to Honorable Mr. Justice Vineet Kumar Mathur, Judge, Rajasthan High Court and Co-Chairman, Rajasthan State Judicial Academy.
I request Ms. Sakshi Sharma, Trainee Judicial Officer, RJS Batch 2627, to kindly present a planter to Honorable Mr. Justice Vineet Kumar Mathur, sir. May I now invite Mr. Mohit Vyas, Deputy Director, Rajasthan State Judicial Academy, to kindly present the ceremonial safa to Mr. Balkrishna Mishra, Director, Rajasthan State Judicial Academy. I further request Mr. Chandan Badgujar, Trainee Judicial Officer, RJS Batch 2627, to kindly present a planter to Sir. Thank you. A great institution derives its strength from visionary leadership and meaningful guidance. To formally welcome this august gathering and address the trainee judicial officers, I now most respectfully invite Honorable Dr. Justice Pushpendra Singh Bhati, Judge Rajasthan High Court and Chairman Rajasthan State Judicial Academy, to kindly deliver the welcome and introductory address. Honorable Justice Vijay Bishnoi Sahab, Judge Supreme Court of India and former chairman of this academy, needs no introduction, but I may, at least for the trainee judges, not only sir remained at various distinguished positions in bar in Rajasthan High Court and practiced for a very long period of about 2.5 decades in Jodhpur, but had a distinguished career as a Chief Justice of Four Sisters on the Northeast, and then later on elevated to Honorable Apex Court. While I was the lucky man who took the baton from him of this academy when he was elevated as Chief Justice, I found that a lot of energy had been infused on his part. And therefore, it was easier for me and Vineet Mathur Sahab to carry on the same energy and deliver our best, what we saw him delivering and the predecessors therefrom delivering. Our own patron-in-chief, Honorable Chief Justice S.P. Sharma sir, who, being a distinguished, not only is a distinguished colleague, senior colleague, but also has given us a free hand as far as the academy is concerned. And today, I see academy not as an individual accomplishment, but as an institutional accomplishment, as one of the best academies in this country. And therefore, I repeat, it is the institutional accomplishment which has happened with the help of each member of this distinguished community. My esteemed brother, co-chairman Vineet Mathur Sahab, our team head director Mishra Sahab, my respected colleagues Singhi Sahab, Mukesh ji, Sanjeev ji, Baljinder ji, Sunil ji, Yogendra ji, Ashok Sahab, Nupur ji, Kuldeep ji, Lakshman sir, Indrajit ji, Farzan Sahab, Rekha ji, Chandrasekhar Sahab, Sandeep ji. My team members in the academy, Chetna ma'am, Khatri Sahab, Vyas ji, Payal ji, the Registrar General, the PPS, the members of the Registry Examination Cell, the two honorable district judges, CJMs, other members of the Registry Examination Cell. And today, the reason of this shining morning, the trainees who are here. This is not an ordinary day because it happens in a generational mode. People ask me many times
that whether this 3 years training, 3 years practice is a good thing or is not a good thing. I always say that initially 3 years was not mandatory, then it became mandatory, then it became not mandatory, and now it has again become mandatory. But what is important is that these experiments will continue, but these experiments will ride on your shoulders. I am happy to inform our Chief Justice, our Chief Guest, Elder Brother Vishnoi Sahab, that out of this batch, sir, we didn't implement, this came when the process was going on and liberty was given even after the judgment that this batch, whatever advertisement has come. So this is going to be a youngest batch in recent times. How many of you are below 25? Quite a number of you, right? So if below 25, if you exude proper confidence, if you are able to show proper temperament, if you are able to do good on the chair, the experiment may change because changes happen on your shoulders. If you perform well, the younger members, tomorrow the system may realize that younger members are doing well and it can be done again, it can be changed again. I don't wish to enter into whether this is good or this is good, but these are things which will continue to evolve, and with the time it has to be done. Today is an important day, not only for you personally, but it is for the system. Why? Because you are the next generation of judges who are going to take the reins from the previous judges. Once we are here to take the mantle of next generation, then the responsibility lies on your shoulders. That while you stay in this Gurukul, you are able to give your best to learn the best. Your best is to give energy to us, where we and our team can do best on you and work on you so as to ensure that our next generation is not only brings us proud, but it goes on as an energizer to the judiciary, to the whole community. So that is the eminence each one of you will carry on your own shoulders. Question is, I take you to the shlok of which is our academy's this thing. It is, you must have read, if you would have seen in a lot of places it is written. It is Karmanyev hi sisiddham. It is the full shlok is from Bhagavad Gita. Karmanev hi sisiddham mastita janakada hai lok sangraha mevapi samp shank katur maharsi. Now, why it signifies the academy, Rajasthan Judicial Academy, is because it is totally, it emphasizes the significance of action, karma. The story behind it is that one of the most renowned rulers, King Janak, who was known for his wisdom and farsightedness, was once asked, is it only possible कि दुनिया में रिनाउंस करके संत बन के ही केवल दुनिया का कल्याण हो सकता है? तब उन्होंने ये कहा कि संत बन करके दुनिया का कल्याण हो सकता है, लेकिन कर्मण्येव ही संसिद्धमस्ति का मीनिंग उन्होंने वहां समझाया कि कर्म से, एक्शन से जो कल्याण दुनिया का हो सकता है वो किसी भी चीज से नहीं हो सकता. इसीलिए आप लोगों को अपने एक्शन से नेशन का, कॉन्स्टिट्यूशन का और इस देश का कल्याण करना है. ऐसी स्पिरिट जो है आपके इसमें श्लोक, आपने एकेडमी के इस एम्ब्लेम में है. अब राजा जनक ने जब ये कहा तो उनका मीनिंग ये था कि यदि अगर आप प्रोएक्टिव नहीं होंगे, कमिटेड नहीं होंगे, यदि अगर आप हार्डवर्किंग नहीं होंगे, और यदि अगर कोई भी सोसाइटी के अंदर काम नहीं करना चाहेगा या काम के लिए आगे नहीं आना चाहेगा, तो उससे पूरी सोसाइटी ही नहीं, पूरा नेशन जो है उससे डिस्टर्ब होता है. मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि इस गुरुकुल में जिसमें आज आप पहली बार आए हैं उसकी एमिनेंस क्या है, क्या जरूरत है गुरुकुल की? क्यों ना आपकी सीधी पोस्टिंग कर दी जाए. आपने सब ने एलएलबी कर रखी है, आप सब हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर बहुत कम सीट्स के अंदर बहुत हाई मेरिट के ऊपर इस यहाँ एंटर हुए हैं, तो फिर क्या आवश्यकता है? इसकी आवश्यकता समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा. दुनिया भर में एकेडमी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स लॉ की और जुडिशरी की नोन है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इंस ऑफ द कोर्ट, इंग्लैंड की इंस ऑफ द कोर्ट,
हज़ारों सैकड़ों जजेस को उन्होंने ट्रेनिंग दी, एजुकेशन दी, और समय समय पर एजुकेशन और जुडिशियल ट्रेनिंग को आगे बढ़ाया। ऐसा ही कुछ रोमन एम्पायर में भी था, ऐसा ही कुछ ग्रीक एम्पायर में भी था, और ऐसा ही कुछ आज वर्ल्ड ओवर वेरियस कंट्रीज में है, जिसमें कनाडा, सिंगापुर और ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ जुडिशियल ट्रेनिंग को एमिनेंस दी गई। लेकिन मैं आपको इससे और पीछे, युगों युगों पीछे ले जाना चाहूँगा। जब गुरुकुल में, जब उस समय के सारे जो प्रिंसेस थे महाभारत के टाइम, जो 105 लोगों को जो वहाँ गुरुकुल के अंदर जो ट्रेनिंग दी गई, उस ट्रेनिंग की एमिनेंस क्या थी, इस बात को जरा ध्यान से सोचिएगा। गुरुकुल में केवल उनको पढ़ाना सिर्फ एक पार्ट था। गुरुकुल में पढ़ाने के अलावा उनकी ट्रेनिंग के अंदर तीरंदाजी करना, गदा चलाना या अन्य अस्त्र शस्त्र चलाने के अलावा यह भी देखा जा रहा था कि मटकी में से कौन पानी जल्दी भर के लाता है। यह भी देखा जा रहा था कि तालाब के अंदर अगर गुरु गिर जाए तो कौन ने निकालने के लिए, उसको मगरमच्छ से बचाने के लिए किसने क्या किया। और यह भी देखा जा रहा था कि वो जो चिड़िया दिख रही है, उस चिड़िया की पर इंपॉर्टेंट है निशाना लगाने के लिए, उसका सिर इंपॉर्टेंट है, पांव इंपॉर्टेंट है या आंख इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो हर पल यहां है, जो एकेडमी के अंदर, जो ट्रेनिंग के अंदर है, ये सिर्फ किताबों से संबंधित नहीं है। आपके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो सीनियर जजेस हैं, आपके पास जो भी लोग रोज मिलने आएंगे वो सीनियर जजेस होंगे, और कम्युनिटी के सीनियर्स होंगे, जिनके मदद से आप ये समझ पाएंगे कि किस प्रकार से आपको एक साल बाद जब फील्ड में जाकर के आप खुद सीट को एड ऑन करें तो उस सीट को अच्छे से एड ऑन कर सकें। इसी के लिए ऐसे गुरुकुल का ऐसा सोच इस देश में मौजूद है, और हर देश में जो प्रगतिशील है वहां मौजूद है। इस प्रगति का प्रतीक आज आप हो। अगली बार जो अगली जनरेशन आएगी वो आएगी, पिछली बार जो पिछली जनरेशन थी वो थी। तो आज की जनरेशन जो राजस्थान जुडिशरी की जो आप मेकआउट कर रहे हैं वो एक इंपॉर्टेंट बात है। और गुरुकुल के समय से ही जो बात इंगित की गई है कि आप अनेक फैक्टर्स पे ध्यान दें। आप खाना कैसे खा रहे हैं, आप कल्चरल में कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स में कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप फील्ड में आपका कंडक्ट कैसा है, आप टाइम से तैयार होते हैं कि नहीं होते, आप वेल ड्रेस्ड हैं कि नहीं, आप अपने चेहरे को सौम्य और सुशील रख पाते हैं कि नहीं पर कठिन परिस्थितियों के अंदर, आप सीखने का कितना प्रयास करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों से ये डिपेंड करेगा कि जिस दिन आप इस एकेडमी से वैलिडेटरी फंक्शन करेंगे, जब हम आपका, उस दिन आपके चेहरों में जो एनर्जी होगी उसी पर डिपेंड करेगा कि इस एकेडमी का मार्ग कितना अच्छा था और आप लोग कितना अच्छा इस परिस्थिति को कितना अच्छा आप लोग तैयार कर पाए, या इसके हिसाब से आप लोग कितना आगे अपने आप को बढ़ा पाए। मैं माननीय चीफ गेस्ट को यह भी बताना चाहूँगा कि आपके मार्गदर्शन जो आपने चेयरमैन एकेडमी के रूप में दिया, उसके बाद पैटर्न इन चीफ के खुले हाथ और मार्गदर्शन के कारण हमने एकेडमी के अंदर पिछले 2 साल के अंदर बहुत सारी नई नई चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस करी, जिसमें हमने रोल प्ले सिमुलेशंस को बढ़ाया, प्रॉब्लम सॉल्विंग और केस स्टडी डिस्कशंस को बढ़ाया, हमने पीयर लर्निंग और रिफ्लेक्टिव इंटरेक्शंस को बढ़ाया, हमने इवैल्यूएशन टेस्ट किए, इंटरैक्टिव डिजिटल लर्निंग को हमने बढ़ाया, एआई एक्सपोजर बढ़ाया हमने अपने बच्चों का, अपने ट्रेनी जजेस का। और सर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पिछले बैच के अंदर सिद्धार्थ शर्मा जो स्पेशली एबल्ड जुडिशियल ऑफिसर थे, विजुअली इम्पेयर्ड, उनको हमने, उनकी जर्नी रिमार्केबल रही क्योंकि उनकी रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन, जिसमें हमने उनको पूरा ट्रेन किया। तो अपने आप में आपको ये टाइम में ब्रह्म दत्त जी थे, तो एक के बाद एक जो राजस्थान जुडिशियल एकेडमी जिस तरह से इंक्लूसिव वे में चल रही है, इस बार भी सर स्पेशली एबल्ड ऑफिसर्स, जिसमें एक ऑफिसर लो विजन के हैं, 2 ऑफिसर्स लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के हैं, 1 ऑफिसर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के हैं, शायद वो ज्वाइन नहीं किए हैं। उसके अलावा हम एक ही ऑफिसर हैं जो शायद ज्वाइन नहीं किए हैं पूरे बैच में। और इसके अलावा भी सर हमने एक ट्रूली इंटीग्रेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट किया है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा सर कि 27 हमारे पास ट्रेनी महिला जजेस हैं टोटल 41 के बैच के अंदर। और हमने सर इस बार एक एक्सपेरिमेंट के रूप में एडिटोरियल कमिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज, कल्चरल कमिटीज, स्पोर्ट्स कमिटीज, मेस कमिटीज और अनेक तरह की पार्टिसिपेटिव और कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ हमने इन ट्रेनीज को बांटा और इनको अलग अलग ड्यूटीज ऑलरेडी देनी शुरू कर दी। आज से शुरू कर देंगे और पीछे भी हमने इसी तरह बांट करके उनको ड्यूटीज देके स्वयं, जैसे जिसको बोला कि खाना अच्छा नहीं लग रहा था पहले दिन जब पिछला बैच ज्वाइन किया, तो जब उन्हीं की मेस कमेटी ने उस खाने का मेन्यू डिसाइड किया तो उन सबको खाना भी अच्छा लगने लग गया। तो इस तरह से कोलैबोरेटिव वे के अंदर हमने मूवमेंट किया सर। और हमारी एडिटोरियल कमेटी के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा सर कि उनके इनिशिएटिव पे हमने 210 ट्रेनी जजेस से आर्टिकल्स मांगे
और 210 में से उनमें से जिसने भी दिए और थोड़ा भी आर्टिकल मजबूत था तो करीब हमने 150 आर्टिकल्स की बुक पब्लिश करके और एकेडमी के अंदर एक इतिहास रचने का प्रयास किया। इसके अलावा हमने टेक्नोलॉजी पे विशेष ध्यान दिया सर, ट्रेनी जजेस पे। और आज जो बदलते युग में जो पिछले साल 2 साल के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उनसे हमने इंक्लूडिंग एआई हमने बच्चों को उससे रूबरू कराया और आगे भी कराते रहेंगे, ऐसा हमने एकेडमी ने प्लान कर रखा है। हमने सर एक इनिशिएटिव लिया, एक मेंटोर इनिशिएटिव। उसमें हमने हर ट्रेनी को पूछा कि आप एक बात बताइए कि सब जज अच्छे होते हैं लेकिन एक जना जिसने आपकी ट्रेनिंग में ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाया उसका नाम बताइए। तो जो उन 200 बच्चों ने जो 30 जजेस का नाम बताया, उन 30 को हमने यहाँ बुलाया और उन बच्चों से उनकी बातचीत कराई और उन बच्चों से रियल टाइम इंसिडेंट शेयर कराए और पूरे सेशंस केवल इंटरेक्शंस पे किए कि जज बनने के बाद आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ा, जो अपने आप में बहुत सक्सेसफुल रहा सर। हमने सर अभी 15 दिन पहले 10 दिन पहले हमने जजेस प्रीमियर लीग 2026 कराई, रियूनिटी रन कराई सर, हमने मैराथन्स ऑर्गेनाइज करी, हमने जो है आरोग्य वाटिका हमारे ट्रेनी जजेस के जरिए करी और इन्हीं सब चीज़ों को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। और हमने कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इमोशनल रेजिलियंस के लिए भी विशेष प्लान्स बनाए। हमने सर उनके लिए एक्सकर्शन टूर तो सब हमेशा से रहा, हमने उनके लिए जो है वो कल्चरल इवनिंग्स भी हमेशा से रही, हमने पेंट योर हार्ट, नाट्यम और ऐसी अनेक हमने प्रतियोगिताएं और ऐसी अनेक हमने कार्यक्रम कराए जिससे उन बच्चों, उन ट्रेनी जजेस को एक लीडरशिप को उनको उकेरने के लिए, उनकी लीडरशिप को इंगित करने के लिए, उसको उजागर करने के लिए हमने अपना पूरा प्रयास एकेडमी के रूप में एक सामूहिक परिवार के रूप में हमने किया। हमने सर न्यूज़लेटर्स हर बार छापे, हर बार एकेडमी के एडिटोरियल बोर्ड इन जजेस ने अपने ट्रेनी जजेस ने अपनी तरफ से तैयार करके उनको किया। और ये सारी एक्टिविटीज़ इस बात को बताने के लिए है कि किस प्रकार से आपने जो हमें एक मजबूत संस्था दी उसको हमने संभाल करके और आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले जजेस को एक बात कहना चाहता हूं। अब मैं चीफ गेस्ट से वापस ट्रेनी जजेस पे आ जाता हूं कि आज ट्रेनिंग का महत्व और बढ़ गया और वो महत्व इसलिए बढ़ा है, याद रखें कि अब वो हर जज में पहले 10 साल में फर्क आ रहा था जज के रोल में जब जनरेशन चेंज होती थी। आज 10 साल में चेंज नहीं आ रहा, आज हर 1 साल में या 2 साल में जजेस की जनरेशन चेंज हो रही है। और इस जनरेशन चेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप जितना गंभीरता से और जितना अच्छे से निभाएंगे उतना अच्छा इस संस्था और देश के लिए आप कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सर एक्सरसाइज, तो आज से पहले जज का काम कभी भी इलेक्शन में नहीं था, लेकिन पहली बार जब एक राज्य के 2 संवैधानिक संस्थाओं के बीच में टकराव बढ़ गया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 100% जज उस राज्य के और 100 जज उड़ीसा के और 100 जज झारखंड के बुलाकर वहां उनको ला करके वो जो 2 संवैधानिक संस्थाओं के बीच में इलेक्शन कमीशन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो संघर्ष चल रहा था उस संघर्ष को रुकवाया। जजेस ने अपनी जान पे खेल करके, मुझे नहीं पता आप लोगों ने वो न्यूज़ देखी कि नहीं देखी, जब पथराव में उनकी गाड़ियां टूट गई, जब उनको वहां जगहों पे रख के और वहां रोक दिया गया, जजेस ने अपनी जान पे खेल करके इस देश के प्रजातंत्र की रक्षा करी। इसी तरह से आज रोज रोल इवॉल्व हो रहा है। अभी 2 संडे पहले राजसा में चीफ जस्टिस के डायरेक्शंस पे सारे जजेस राजस्थान के सारे स्कूलों में गए और उनको प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल अब्यूज टू चिल्ड्रन और बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रासंगिक जो युवाओं से संबंधित कानून थे उनकी जानकारी दी। आज का जज वो जज नहीं है कि जो एक कमरे में गया आज से 50 साल पहले और उसमें अपना अच्छे निर्णय देकर के बाहर आ गया। वो तो भूमिका आपकी है ही है, लेकिन आज आपके पास लोक अदालत है, आज आपके पास मीडिएशन है, आज आपके पास लीगल सर्विस अथॉरिटी है, आज आपको एक प्रशासनिक के रूप में जिन रजिस्ट्री के मेंबर्स को, जो सीनियर मेंबर्स आज यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आप उनसे बातचीत करेंगे तो आप जानेंगे कि इनको अकाउंट से लगा करके, ट्रांसफ़र से लगा करके, ACR से लगा करके, प्रशासन के इतने सारे पहलू जो हैं वो इन लोगों को संभालने पड़ते हैं, जो अपने आप में एक विशेषज्ञता की निशानी है। और इसके लिए ये लोग अपने आप को ट्रेन करते हैं और एक उत्कृष्ट प्रशासन देने का प्रयास करते हैं। ये चेंजिंग डायमेंशंस जो हैं इनको आप ध्यान रखना ट्रेनिंग के दौरान। आज टेम्परामेंटल इश्यूज हैं, आज टेक्नोलॉजी के इश्यूज हैं। पार्लियामेंट समय समय पे कानून लाती है, कानून लाना आसान है, लेकिन उस कानून को इम्प्लीमेंट करना, उस कानून से जो एस्पेक्ट्स अराइज हो रहे हैं उनको देना, ये सब आपकी जिम्मेवारी है। क्योंकि जो नए कानून आएंगे वो आपके कंधों पे आगे बढ़ेंगे, आपकी एनर्जी पे आगे बढ़ेंगे। और ये आवश्यक है कि न केवल आप देख रहे हैं कि यहाँ एकेडमी में हम न केवल एक प्रोफेसर्स और
और उनका काम करते हैं, बल्कि एक गार्जियंस का भी काम करते हैं। तो कितने सारे रोल जजेस के लिए आज हमारे पास हैं। एडीआर फैसिलिटीज़ की मैंने आपको बताया, केस एलोकेशंस हैं, स्टाफ मैनेजमेंट है। आपके जाते ही जिस दिन कोर्ट में आप घुसोगे, 10 जनों का स्टाफ आपके अंडर में होगा, आपको उनकी इतिहास लिखनी पड़ेगी, आपको उनको प्रशासनिक रूप से गाइड करना पड़ेगा, आपको उनसे ऑप्टिमम काम लेना पड़ेगा। तो तरह तरह की बातें आपको ध्यान में रखनी है, और इस ट्रेनिंग के दौरान आपको देखना है कि जितने रोल बढ़ रहे हैं उतनी ही सक्षमता से आप उसको निभा पाएं। हम पूरा प्रयास करेंगे ट्रेनिंग से, फील्ड ट्रेनिंग से और अन्य प्रयासों से हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको वहां तक पहुंचाएं जिस जगह आपको 1 साल की ट्रेनिंग के बाद पहुंचना चाहिए। लेकिन हमारे जितनी की जितनी जिम्मेदारी आपकी भी है कि खुली आंखों से और पूरे दिमाग और कमिटमेंट के साथ में आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि आज से आप एकेडमी के स्लोगन को सही ठहराने के लिए अपना कार्य शुरू करेंगे। ये एक अद्भुत कार्य है जो सिर्फ ईश्वरीय शक्तियों को ही दिया जाता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, उसके साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं कि मेरी नज़र में डॉक्टर बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ा काम है। इंजीनियर, आर्किटेक्ट, होम मेकर बहुत बड़े काम है। लेकिन समाज ने सदियों से केवल जज को बुलाया डिवाइन जॉब। तो आप जो जॉब करने जा रहे हैं वो ना तो कोई सिविल सर्विस वाले कर सकते हैं, ना लेजिस्लेचर वाले कर सकते हैं, ना कोई भी कर सकते हैं। अपनी बात को समझने की कोशिश करिए। डिवाइन का मतलब ये नहीं कि आप खुद भगवान बन गए। डिवाइन का मतलब उस सीट, जब मंदिर पे जाते हैं कई बार हम पुजारी की जगह पे बैठ के पूजा करते हैं, तो हमारी वो सीट वो इंपॉर्टेंट है जहाँ हम के अंदर हमारे अंदर लगन होनी चाहिए, जहाँ हमारे अंदर समर्पण होना चाहिए, जहाँ हमारे अंदर कमिटमेंट होना चाहिए, जहाँ हमारे अंदर भावना होनी चाहिए, जहाँ हमारे अंदर इमोशन होना चाहिए, जहाँ हमारे अंदर वो शक्ति होनी चाहिए जो दिव्य शक्ति से मिल करके हमारे अंदर आम आदमी की सेवा करने के लिए हमको दी गई है। यदि अगर आप उस शक्ति का आह्वान कर पाए इस एकेडमी में, तो ट्रूली वैलिडेटरी सेशन के दिन हम सब जो गार्जियंस यहाँ बैठे हैं वो हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा दिन होगा, क्योंकि हम न्यायपालिका को एक ऐसी पीढ़ी न्योछावर करेंगे जो न्यायपालिका को अगले युग में लेके जाएगी। हम और बात करते रहेंगे, आज समय कम है। हम चीफ गेस्ट और चीफ जस्टिस जैसे प्रखर वक्ता अभी मौजूद हैं। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। स्वागतम। Thank you, Your Lordship, for your insightful address. The oath of office is not merely a ceremonial formality. It is a solemn pledge to uphold the Constitution, preserve its fairness, and serve justice with integrity. I now most respectfully invite Honorable Mr. Justice Sanjeev Prakash Sharma, the Acting Chief Justice, Rajasthan High Court and Patron-in-Chief, Rajasthan State Judicial Academy, to kindly administer the oath of office to the trainee judicial officers. Folder लिखो। Good afternoon, children. Please rise. You all have to speak after. This is the form of oath. You all have it with you. So I will say the first word and then you continue with this. I, your names, having been appointed as civil judge and judicial magistrate, presently under training, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear and favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. Now you can all sign on these papers and hand it over to them.
Thank you, Your Lordship, and congratulations to all our newly inducted trainee judicial officers. I once again most respectfully now invite Honorable Mr. Justice Sanjeev Prakash Sharma sir to kindly deliver the special address. Honorable Mr. Justice Vijay Bishnoi sir, Judge, Supreme Court of India. Honorable Dr. Justice Pushpendra Singh Bhati, Judge, Rajasthan High Court and Chairman of the Rajasthan Judicial Academy. Honorable Mr. Justice Vineet Kumar Mathur, Co-Chairman of the Rajasthan State Judicial Academy. Sister and brother judges of the Rajasthan High Court, and all of you are also patrons of this Judicial Academy. Chanchal Mishra ji, the Registrar General of the Rajasthan High Court, and other officers of the registry. Shri Balkrishna Mishra ji, Director and other officers of the Academy. And of course, our enthusiastic young trainee officers. It is a matter of immense pleasure and satisfaction for me to address this distinguished gathering at the Rajasthan State Judicial Academy for this inaugural ceremony. Today is a moment of pride, promise, and responsibility, not only for you young officers who have earned their place in the judiciary through perseverance and merit, but also for this entire institution itself. A new generation of judicial officers have joined, and they would be entrusted with the sacred duty of administrating justice. Before I speak a few words to you all, I must extend my heartfelt gratitude to the Honorable Mr. Justice Vijay Bishnoi, who graciously accepted my invite and our High Court's invite, and he has specially taken out this day for coming here, and he's taken a leave for the day. So we are so thankful to him, and it is his attachment to this Judicial Academy which has brought him back here. He has been the chairman of this Judicial Academy, and under him several judicial officers have got trained and are working in the Rajasthan High Court. He is truly a son of soil. He has practiced in Jodhpur. I was practicing in Jaipur, but I would come here and I would be often talking to him about how the court was, because I was new to this court. I had just started my practice in Jaipur, and I have been always guided by him, as he has been my elder brother, and I am always thankful to him for giving his guidance at all times wherever I need it. He has very successfully been the Chief Justice of Assam and other states of, those are 5 states, right? 4 states, sister states. Judicial Academy has been one place which is very close to my heart also. I had, from Rajasthan, I had gone to Patna High Court. Patna, there's another Judicial Academy right next to the bank of River Ganga. There are a lot of more judicial officers than what are selected here, and the place is small for them. Brilliant judicial officers, but the training is almost the same. Similarly, I have been to Chandigarh. Chandigarh Judicial Academy is also one of the finest academies of India. But when I see this, our own Judicial Academy, I find that this is much, much better than even the Chandigarh Judicial. The funds which are being provided there might be more, because it gets funds from 2 states. And then the officers are also coming from Haryana government, those who are from Haryana and those who are from Punjab. Under the chairmanship of Dr. Pushpendra Bhati, as he has already told you, there have been a lot of sea change in the training program which is being done. And you all will be given that kind of rigorous training which is required to deal with the latest laws,
latest problems which you would face when you would join as judges. So be very attentive, be totally concentrated, and don't be superfluous. Whatever is given to you to read it thoroughly. If you have any problems, you can always ask all your tutors here and even the honorable judges, as and when they will come to address you on any of the topics which they may want to address to you. Be free, feel that that it is a family, and also interact with each other. More interaction will clear your problems, clear your doubts more. So that aspect also needs to be addressed to. At the same time, mental health, you must be always there to do yoga, which is in the morning. Never be shy of that. And there is also a little bit of element of strictness also in this training program. So you have to be very, very disciplined also. There's only 1 year for you. You will never get any chance thereafter. You have to remain as simple on the ground. A judge sits a little bit above. Memories forever, a moment where years of perseverance transform into responsibility, purpose, and public trust. We shall now proceed with our special segment titled The First Feeling, where some of our newly inducted trainee judicial officers shall briefly share their thoughts and emotions on entering this noble profession and this service. May I first invite for this Ms. Muskan Garg to kindly come forward and share her reflections. Good afternoon, everyone. Honorable dignitaries on the dais, honorable judges of the Rajasthan High Court, respected officers of the registry and Rajasthan State Judicial Academy, distinguished guests and my fellow batchmates. I am Muskan Garg and today I officially become Judge Muskan Garg. This prefix is truly an unreal feeling. Standing on this dais feels like a dream come true, a dream from which I never want to wake up. The seeds of this dream were sown in 7th class when my principal sir asked me, what do you want to become in future? And I excitedly said, watching all those movies, courtroom movies, that I want to be a judge. Little did that little girl knew that it would make her dream so big. From writing CLAT to writing RJS, I have come this far and I will always be grateful to the Almighty, my parents, my sister, my brother, my friends and my mentors who believed in me when I did not believe in myself. Remembering the result day, I was constantly refreshing the website. And then the result was uploaded. I saw my name, confirmed the rank, confirmed the date of birth, father's name, roll number, confirmed it once again, asked my mama to confirm it. And it was that moment when my dream was no longer a dream. It was my reality. And only one feeling, one word can describe it, gratitude. I remember one of our seniors told us that this feeling can't be explained or described. It can only be felt and lived. And today, hearing all these judges makes me realize that I can feel and live that feeling. They say that the robe of judge not only carries privilege, it carries responsibility. Hearing sir, I can feel this responsibility. The responsibility to become a better version of myself. I really look forward to learn from all the great mind here and emerge as the best version of myself who can serve justice. Thank you and have a nice day. Thank you, Muskan. And now I invite Mr. Hardik Kaushal to kindly share his thoughts with us. Honorable dignitaries on the dais, honorable judges of the Rajasthan High Court, respected officers of the registry and Rajasthan State Judicial Academy, distinguished guests and my batchmates, a very warm good afternoon to all of you. On 19 December 2025, when I saw my name in the Rajasthan Judicial Services result,
For a few moments, everything around me became silent. It felt unreal. Years of hard work, uncertainty, sacrifice, and prayers suddenly converged into that single moment. I'd begun preparing for this journey in 2023, carrying not only my own aspirations but also the dreams my parents had nurtured for years. When my arms were amputated at the age of 7, life changed irreversibly. There were moments of isolation, there were moments of doubt, there were moments when even the simplest task felt insurmountable. But I never allowed my adversary to define me. The faith that my mother had in me always taught me that resilience is not born in comfort but in struggle. Somewhere along this journey, I truly understood the meaning of Khalil Gibran's words, quote, "Out of suffering have emerged the strongest souls. The most massive characters are seared with scars," unquote. So when the result was declared, what I felt was far beyond happiness. It was gratitude, relief, fulfillment, and an overwhelming sense of responsibility. I looked at my mother, and in her silence, I could see years of sacrifice, prayers, patience, and an unshaken belief. For me, it was never merely about clearing an examination. It was the triumph of hope over despair, endurance over limitation, and faith over fear. That day, I realized that no limitation is bigger than one's willpower and resilience. Thank you. Thank you, Hardik, for sharing your experience. Next, I invite Ms. Gauravi Bhatt to kindly share her experience. A very good afternoon to honorable dignitaries on the dais, honorable judges of Rajasthan High Court, respected officers of the Registry and Rajasthan State Judicial Academy, distinguished guests, and my dear batchmates. It feels so unreal to share a big part of my memories with you all. The first feeling that I had when I saw my result was gratification, contentment, and serenity. Jumping and crying with tears of happiness, my father hugged me tightly, patted my back, and said, "Shabash, mera sher." And these words made my entire existence worthy. And the cherry on the top was a gentle kiss from my mother, saying, "Tune mera sapna pura kar diya," as she was also an aspirant, but she couldn't join the services due to family responsibilities. So she lived her dream through my eyes. So at that moment, I could see not just one, but two aspirants winning. Also, there was this feeling of belongingness to judicial fraternity and a sense of responsibility towards society, that I have to do justice in all realms. I feel so honored to be appointed as an officer by this esteemed institution, and I will continue to carry the legacy of prevailing constitutional morality and make my selection a worthy contribution to it. Thank you all. Have a great day. Thank you for your words, Gauravi. And next, I invite Mr. Bharat Changra to kindly share his first feelings. A very good afternoon to the honorable dignitaries on the dais, honorable judges of the Rajasthan High Court, respected officers of the Registry and the Rajasthan State Judicial Academy, distinguished guests, and my fellow batchmates. As I stand here today, I could vividly recollect the day when our result was declared. 19th of December 2025. Right since the morning, I was on my toes, refreshing the High Court website time and again. Around 2 p.m., the PDF was there. With my hand shaking and my heart praying, I opened the PDF and there it was. Now we all know no dictionary would ever suffice to describe the feeling that we had when we saw our name in that PDF. I would say it was a blend
of a feeling of happiness that it has finally happened, a sense of achievement that I finally did it, a moment of gratitude to the universe for answering my prayers, and a question if I was still dreaming. Now, coming out of the flashback, and as I stand here today, I would talk about today because this day again would give me a feeling which I would be describing for the rest of my life as a first feeling. Today, we all are comparable to the tiny tots waiting for their induction in a kindergarten. This academy will be our school again, where we will be molded into able and efficient judicial officers under the tutelage of the honorable judges of the High Court and respected officers of the academy, who will hold our hands and teach us to impart justice by wielding the instruments of law and order, while also holding on to the values of empathy and humanity, because it's a human touch by a judge which turns law into justice. With this, I conclude my words, looking forward to a great learning experience ahead. Thank you so much. Have a nice day. Thank you, Bharat. And finally, now I invite Ms. Rekha Chaudhary to kindly express her first feelings on joining this judicial service. गुड आफ्टरनून टू ऑल। मंच पर विराजमान माननीय अतिथिगण, राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण, रजिस्ट्री और राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी के सम्मानित अधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण और मेरे बैचमेट्स, आज इस गरिमामयी मंच पे न्यायाधीश की शपथ लेने के बाद मेरा हृदय गर्व, कृतज्ञता और बहुत बड़ी जिम्मेदारी के एहसास से भरा हुआ है। 19 दिसंबर 2025 का 2:15 बजे का वो वक्त हम सबके दिलो दिमाग में बस गया है जब पीडीएफ में हमने अपना नाम देखा होगा। पहली भावना जो उमड़ी थी वो थी असीम राहत, बेचैन रातों की नींद और किसान माता पिता के संघर्ष सब आंखों के सामने आ गया। आंखों में आंसू के साथ जब मैंने अपने पिताजी को फ़ोन किया तो उस वक्त भी वो उस दोपहर में भी खेती ही कर रहे थे। उनकी एक बात मुझे हमेशा प्रेरणा देती रही कि जब किसान खेती करता है और बीज डालता है तो बारिश हो जाती है तो क्या वो खेती करना बंद कर देता है, और यही जो बातें थी वो मुझे पिछले 3 अटेम्प्ट में प्रेरणा देती रही। शायद हम उनके संघर्ष को कम कर पाएँ। यह सफलता माता पिता के संघर्ष और परमात्मा की असीम कृपा का ही परिणाम है कि आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। 22 माह तक विधि अधिकारी के रूप में आरपीएससी और आयुक्तालय विशेष योग्यजन में सेवा देने के बाद ईश्वर ने मुझे यह मौका दिया है कि समाज में न्याय द्वारा हम एक बदलाव ला सकें। आज ये खुशी एक गंभीर कर्तव्य में तब्दील हो चुकी है। यह कुर्सी केवल एक पद नहीं बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति का न्यायपालिका पर अटूट विश्वास है। इस महान दायित्व को निभाते हुए मैं हमेशा इन पंक्तियों को दिल में रखूंगी कि ना किसी के प्रभाव में ना किसी के अभाव में, फैसला जो भी होगा होगा सच के स्वभाव में। अदालत की कुर्सी का बस एक ही ईमान है, यहाँ न्याय नहीं इंसान नहीं, न्याय ही भगवान है। थैंक यू सो मच। Thank you, Rekha. Thank you to all the trainee judicial officers for these heartfelt and inspiring reflections. Your words beautifully capture the emotions, aspirations, and sense of responsibility that accompany this remarkable journey. A judicial officer is guided not only by law, but by continuous learning. Books therefore become lifelong companions in the pursuit of wisdom and justice. We shall now proceed with the symbolic distribution of curated set of law books to our trainee civil judges. For this, I most respectfully request the honorable dignitaries on the dais to kindly present the book sets to Diksha Raj, Krishna Sagar, Ranu Anand Chauhan, Himanshu Singh, and Ms. Madhulika Yadav.
Thank you, Your Lordships. As a symbol of identity, dignity, and belonging to this esteemed institution of justice, the Academy shall now ceremonially present dupattas and ties to our trainee judicial officers. For this, I once again request the honorable dignitaries on the dais to kindly give away dupattas to our trainee judicial officer Swati Joshi. Please come forward. Shreya Sharma, Bhavya Pokhriyal, Prakriti Ghatia, Ritika Chaudhary. Thank you, Your Lordships. I once again request the honorable dignitaries on the dais to kindly give away ties to our trainee judicial officers, Mr. Arjun Ram, Shubham Bhati, Vishal Bansiwal, Ashutosh Sharma, and Rahul Bansiwal. Thank you, Your Lordships. Institutions are remembered not only through programs that they conduct, but through the ideas and knowledge they preserve for generations to come. The Rajasthan State Judicial Academy's newsletter, Vidhi Vimarsh, stands as a remarkable reflection of this very vision. Comprehensive in its scope and scholarly in its approach, the newsletter chronicles the important academic and institutional activities of the Academy while also serving as a meaningful repository of contemporary legal developments. Along with documenting the concluded programs and initiatives of the Academy, Vidhi Vimarsh thoughtfully captures landmark judicial pronouncements of the Honorable Supreme Court of India and the Rajasthan High Court, significant legal updates including parliamentary debates, press releases, government notifications, gazette notifications, recent legislative amendments, as well as important developments in global jurisprudence and notable High Court circulars and permanent instructions. The present April to May issue, 2nd of 2026, holds special significance as it is dedicated to the final phase of induction training program of RJS batch 2025-26, celebrating their journey, learning and achievements. For this, I most respectfully now request the honorable dignitaries on dais to kindly release this latest edition of our newsletter, Vidhi Vimarsh. Thank you, Your Lordships. It is now the most privileged moment of this ceremony. With profound respect and honor, I now invite Honorable Mr. Justice Vijay Bishnoi, Judge Supreme Court of India, to kindly deliver the keynote address. Honorable Mr. Justice Sanjeev Prakash Sharma, the Acting Chief Justice, Rajasthan High Court and Patron-in-Chief of the Rajasthan State Judicial Academy. Honorable Dr. Justice Pushpendra Singh Bhati, Judge Rajasthan High Court and Chairman of the Rajasthan State Judicial Academy. Honorable Mr. Justice Vineet Kumar Mathur, Judge Rajasthan High Court and Co-Chairman of the Rajasthan State Judicial Academy. Honorable Judges of the Rajasthan High Court,
Registrar General Mr. Chanchal Mishra, and other officers of the Registry of Rajasthan High Court, Director Balkrishanji Mishra, Officer of the State Judicial Academy, dear trainee officers, ladies and gentlemen, a very good afternoon to all of you. At the outset, I would like to sincerely thank the Rajasthan State Judicial Academy for inviting me to this special occasion of the inaugural ceremony of the induction training program for the RJS batch 2026-27. It is both privilege and an honor to address this induction training program for the newly appointed trainee officers. To stand before you today, having walked the path of an advocate, a judge of the High Court, and now serving as at Supreme Court of India, fills me with the immense pride and responsibility. I extend my heartfelt congratulations to all the young trainee officers who are embarking upon the journey in the judicial services. I also convey my special appreciation to all the family members of the trainee officers present here, whose countless sacrifices, unwavering support and dedication have enabled these young minds to achieve such great heights. I had an opportunity to see the final list of the candidates, and it is a matter of great pride for all of us that more than 50% of the selected candidates are women. Which is even more remarkable that 9 out of the top rank holders in this batch are also women. This positive transformation of the legal system reflects how women are breaking barriers and moving to the forefront through their immense hard work, dedication, and unparalleled abilities. It is indeed a remarkable achievement to become a judicial officer in today's highly competitive world, and each one of you has successfully crossed the milestone. However, with this success comes immense responsibility and solemn duty, requiring you to constantly reflect upon and contribute meaningfully to the justice delivery system. Today marks not merely the beginning of your profession, but the commencement of a constitutional duty. By entering the judicial service, you have accepted an office that demands not only knowledge of law, but also clarity of thought, patience, compassion, perseverance, and an unwavering commitment to uphold justice. Judicial ethics in our profession would also play a vital role, and in this regard, Bangalore Principle of Judicial Conduct 2002 categorically established standards and identity of foundational values to afford the judiciary a framework for regulating the ethical conduct of judges. That is, independence, impartiality, integrity, propriety, equality, competence, and diligence. These 6 principles seek to set the highest standards of the ethical conduct expected of all trainee officers and serve as a constant guide to discharge the judicial functions. Furthermore, gender stereotypes must be avoided at all costs, and at the same time, you must not act mechanically and must not be detached from the ground realities. There is a misconception that most critical work happens only in the higher judiciary. However, the reality is that trial courts in our country are the backbone of our judicial system, and thus you occupy a unique position, as you will often be the first point of contact with the common man, where the confidence of the common man will ultimately rest upon your fairness, independence, and credibility. For people, especially the poor, the vulnerable, and the marginalized, the courtroom is often the final refuge. The words spoken from the bench, the conduct displayed in courts, and the decisions rendered by judicial officers shape public faith in the justice delivery system. So in your journey, you will encounter advocates testing your patience in the courtrooms, agitated litigants, and moments of absolute chaos. And that's where your demeanor
on the bench becomes significant, which will dictate the faith of the public in the judiciary. Always remember that the strength of judiciary does not lie in building or tiles, but in the trust of people. Each one of you now become a custodian of that trust. As newly inducted judicial trainees, you will realize that judging is not merely about deciding disputes. It is about balancing competing rights, applying the law with wisdom and sensitivity, and interpreting the law in a manner that upholds substantial justice. Every case that comes before you signifies human lives, emotions, liberties, and aspirations. Behind every case, there is a story of conflict, suffering, hope, and grievance. Therefore, while legal acumen is essential, empathy and judicial temperament are equally indispensable. And therefore, this induction training program is an important foundation for your judicial career. It is designed not only to familiarize you with the substantive and procedural law, but also to prepare for your practical realities of judicial functioning, court management, judicial ethics, writing reasoned orders, handling advocates and litigants, use of technology, and maintaining discipline in court proceedings are all integral components of the judicial responsibility. In this 1 year training, you will learn what your role truly is, what your strengths and limitations are, what your companions and colleagues are like, and what expectations society places upon you. You will also become familiar with the rich constitutional traditions of India, the legal heritage of Rajasthan, and remarkable diversity of our society. All these experiences will shape your judicial temperament. You are entering a judicial system that is also rapidly modernizing through the use of advanced technology and progressive legal reforms. You will be amongst the first generation of the judicial officers entrusted with the effective implementation of the new criminal law framework, including the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023. E-courts, virtual hearing, digitization of records, and technology-driven case management systems are reshaping the administration of justice. However, with such technological advancements, there are concerns over AI-drafted petitions and the use of fabricated legal precedents in the judgments, which is a recurring pattern rather than an accidental misuse and amounts to professional misconduct. Thus, young legal minds like you have a significant role to play in ensuring that technology is used effectively to enhance accessibility, efficiency, and transparency. Also, with the introduction of the Mediation Act 2023 by the Parliament with the object to reducing the burden on courts by encouraging parties to resolve disputes amicably, every young judicial must also advance the cause of legislature by referring the matter to the alternative dispute resolution forums wherever possible. As you all know, the emblem of the Rajasthan State Judicial Academy, which my Lord Justice Pushpendraji has also mentioned, bears the motto of Karmaneva hi Sansiddhi, derived from a celebrated verse of Bhagavad Gita. It conveys the profound idea that by action alone, the likes of King Janaka attained success and perfection. The verse emphasizes the centrality of dutiful action performed with attachment of personal gain or outcomes. By invoking the example of King Janaka, renowned for his wisdom, righteousness, and ideal governance, the verse illustrates that true perfection is not achieved merely through renunciation or intellectual knowledge, but through sincere, selfless consciousness, the discharge of one's responsibilities. The expression by action alone underscores the necessity of active engagement with society and one's duties rather than retreat into passivity or inaction. In the context of judicial training and administration,
The motto serves as a constant reminder that justice is realized through dedicated service, integrity, and unwavering commitment to duty. I urge all of you to treat this period of training with utmost seriousness and humility. The law is dynamic and continuously evolving. A judge must continuously embrace intellectual growth. Continuous learning is the hallmark of good judicial officers. Read extensively, remain updated with the recent judgments, and cultivate the habit of analytical thinking. More importantly, never hesitate to learn from seniors, colleagues, and even from your mistakes and the advocates who are appearing before you. The reputation of a judge is built not in a single day, but through years of disciplined conduct, impartiality, restraint, and honesty. The judicial officer must remain independent not only from external pressures but also from personal biases, prejudices, and emotions. You will encounter moments of pressure, criticism, heavy workload, and difficult circumstances. At times, your decision may be unpopular. However, a judge must derive strength from the Constitution, from the rule of law, and from conviction that justice must prevail over convenience or fear. I would like to add one small story of Panch Parmeshwar by Munshi Premchand, which some of you have also read, which beautifully revolves around the theme of justice, friendship, and morality. The story is set in a rural area, and the main characters of the story are Jumman and Algu, who are best friends. Algu is famous for his wealth in the village, and on the other hand, Jumman is popular for his knowledge and wisdom. The people of village decided to make both of them panchas, that is, judges in the village panchayat. Their bond is tested when Jumman's aunt, mistreated by him, takes her case to the village panchayat. Algu is chosen to a judge to judge the dispute. Initially, Algu is hesitant to rule against his best friend, but chooses duty over friendship and delivers a fair ruling in favor of the aunt. This ruins their friendship, and Jumman begins seeking revenge. Sometime later, when Algu falls in trouble, another panchayat is called, and this time Jumman becomes the panch of the village. Algu is disheartened, fearing Jumman will use this opportunity for payback, and Jumman also wants to take revenge from Algu. But in a turn of events, he realizes immense responsibility and impartiality, the position required, and deliver a fair verdict in favor of the Algu. The story underscores the idea that justice is impartial and above personal relationship, and that Panch speaks only the voice of God, favoring neither friend nor enemy. Lastly, I would also encourage you all to maintain a healthy balance in life. Judicial work is intellectually demanding and emotionally taxing. To discharge your duties effectively, it is important to preserve mental clarity, emotional resilience, physical well-being, and calm and balanced mind contributes greatly to sound judicial decision. To conclude, I pray the Almighty give you strength and courage to face the challenge in the judicial system with patience and unwavering calmness. May your contribution strengthen the cause of justice in our nation. One thing I just want to suggest you that all of you are almost young, and now today you are visiting the picture halls, malls, and often you are partying here and there. But now holding a position of a judge, now your position is different. The society is looking you from a different view. You should restrain, you should sacrifice your passion or whatever it may be. आप लोगों को इस तरह से, जैसे आप पहले मॉल में फ्रीली जा रहे थे, आप ये कर रहे थे, ठीक है, आपका शौक है, वो जरूर पूरा करना है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में कि नाउ द पीपल आर लुकिंग एट यू, यू आर द रोल मॉडल फॉर दोज पीपल. You can imagine if you are going somewhere in a party or enjoying your whatever dancing or disco or whatever you may say,
द पीपल विल सी एंड से कि आज जज साहब को वहां पे देखा था, जज साहब ये क्या कर रहे थे. दैट इज द सेक्रीफाइस यू हैव टू कीप इन योर माइंड. You have chosen for this service. This is a very pious service. In fact, it is not a service, it is a social responsibility of us that as being a judge, we have to maintain the dignity of the law, and equally we have to provide justice to the last man in the queue. With these words only, I would like to again congratulate you, all of you, since as Dr. Bhatti has elaborately discussed about this new ideas and some creative work which they have introduced in the training. I congratulate you, the team of the Judicial Academy, the Acting Chief Justice Sharma ji, Brother Mathur, and all the other judges that you have contributed to. You have in fact involve all the training officers in this training, and this is the best way to train them. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Your Lordship, for your enlightening and inspiring address. Your words shall undoubtedly guide and encourage these young judicial officers throughout their journey in judicial service. Gratitude finds its finest expression in remembrance and respect. Therefore, as a token of our heartfelt respect, we now proceed with the presentation of memento. For this, I most respectfully request Honorable Mr. Justice Sanjeev Prakash Sharma to kindly present the memento to Honorable Mr. Justice Vijay Bishnoi, sir. Thank you, Your Lordships. I now request Honorable Dr. Justice Pushpendra Singh Bhati to kindly present the commemorative plaque to Honorable Mr. Justice Vijay Bishnoi, sir. Thank you, Your Lordships. To propose the vote of thanks, I now most respectfully invite Honorable Mr. Justice Vineet Kumar Mathur. परम श्रद्धेय माननीय न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई साहब, न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, परम श्रद्धेय माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव प्रकाश शर्मा साहब, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवं संरक्षक प्रधान राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, मेरे भ्राता डॉक्टर न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी, अध्यक्ष राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, राजस्थान उच्च न्यायालय के समस्त मेरे भ्रातागण, बहनाएं, आदरणीय रजिस्ट्रार जनरल साहब तथा उनकी पूरी रजिस्ट्री के सम्मानित अधिकारीगण, आदरणीय निदेशक महोदय, पास्ट और प्रेजेंट, न्यायिक अकादमी के अन्य अधिकारीगण, गरिमामयी अतिथिगण, हमारे इस एकेडमी में अधिष्ठापन होने वाले न्यायिक अधिकारीगण, जैसा कि भगवत गीता के पंचम अध्याय के 18वें श्लोक में कहा गया है, विद्या विनय संपन्ने, अर्थात सच्चा ज्ञान सदैव विनम्रता के साथ ही सुशोभित होता है। इसी विनम्रता के, कृतज्ञता के और गौरव की भावना के साथ मैं आज राजस्थान न्यायिक अकादमी के सेवा बैच के 2026-2027 के नवनियुक्त न्यायिक अधिकारियों के अधिष्ठापन शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। संस्थागत जीवन में कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो केवल औपचारिक आयोजन नहीं होते, बल्कि उत्तरदायित्व, संकल्प और भविष्य की दिशा के प्रतीक बन जाते हैं। आज का यह अवसर भी एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षण है। नव प्रवेशित न्यायिक अधिकारियों के लिए
यह केवल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आरंभ नहीं है, बल्कि एक ऐसी संवैधानिक यात्रा का प्रारंभ है, ऐसी यात्रा जो भविष्य में अनेकों जीवनों को प्रभावित करेगी, अधिकारों की रक्षा करेगी तथा समाज के न्याय व्यवस्था में विश्वास और सुदृढ़ बनाएगी। आज का यह बैच हमारी न्यायिक व्यवस्था की समावेशी और संवेदनशील भावनाओं का भी एक परिचायक है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस बैच में प्रतिभा और क्षमता के साथ साथ विविधता, संघर्षशीलता और अदम्य संकल्प का भी एक सुंदर समावेश है। विशेष रूप से दृष्टिबाधित, लोकोमोटर विकलांगता तथा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के संबंधित अधिकारी की सहभागिता यह संदेश देती है कि न्याय की शक्ति जब और अधिक सशक्त होती है, तब न्यायपालिका समाज के प्रत्येक वर्ग के अनुभवों, संघर्षों और संवेदनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। मैं सर्वप्रथम हमारे बड़े भाई विजय बिश्नोई साहब, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी इस गरिमामय उपस्थिति से इस अवसर को गौरवान्वित किया। आपके प्रेरणादायी उद्बोधन, व्यापक न्यायिक अनुभव तथा विधि के शासन के प्रति आपकी प्रतिबद्धता ने हमारे नव प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों को अत्यंत प्रेरित किया है। आज का ये संवाद उनके न्यायिक जीवन में सदैव मार्गदर्शक स्मृति के रूप में अंकित रहेगा। मैं माननीय न्यायाधिपति संजीव प्रकाश शर्मा साहब, हमारे बड़े भ्राता कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय एवं संरक्षक प्रधान, इस एकेडमी के प्रति भी अपनी गहन कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। न्यायिक शिक्षा एवं संस्थागत उत्कृष्टता के प्रति आपका दूरदर्शी मार्गदर्शन और सतत प्रोत्साहन ही वह आधार है जिसके कारण राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी केवल एक प्रशिक्षण संस्थान न होकर बौद्धिक विकास, नैतिक संवेदनशीलता और न्यायिक मूल्यों के संवर्धन का सशक्त मंच बनती जा रही है। मैं माननीय न्यायाधिपति पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी, जो अभी इस एकेडमी के चेयरमैन हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और बोलने में काफी समय लगेगा उनके बारे में, क्योंकि उनको धन्यवाद तो मैं क्या दूं, क्योंकि धन्यवाद तो मई 2027 में देंगे, जब वे अपना इस एकेडमी के बारे में जो आपको अभी बताया गया है उनको जब मूर्त रूप प्रदान करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि उनके अंदर जो एनर्जी का इन्फ्यूजन है और जो एनर्जी आप में छुपी हुई है उसका प्रादुर्भाव करने के लिए वो आपको किस हद तक जगा सकते हैं। मैं उनके लिए भी मेरा आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस एकेडमी को जहां विजय बिश्नोई साहब ने छोड़ा था वहां से लेकर के आज जिस मूर्त रूप में प्रदान किया है वो हम सबके लिए एग्जाम्पल है। मैं राजस्थान उच्च न्यायालय के सभी माननीय न्यायाधीशगण के प्रति अपनी विनम्र कृतज्ञता प्रकट करता हूं, जिनकी गरिमा उपस्थिति एवं आशीर्वाद ने इस समारोह को विशेष गरिमा एवं प्रेरणा प्रदान की तथा आने वाले समय में पूरे एक साल के लिए मैं उनके इस आशीर्वाद को हमेशा एक्सपेक्ट करूंगा और उनके यहाँ पधारने से इन हमारे नए न्यायाधीशों को जो एक दिशा मिलेगी उसकी भी मैं पूरी तरीके से एक्सपेक्टेशन रखता हूं। मैं राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी के निदेशक महोदय एवं समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके समर्पण, परिश्रम और उत्कृष्ट समन्वय ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। प्रत्येक सफल आयोजन के पीछे अनेक लोगों का मौन श्रम और प्रतिबद्धता निहित होती है और आज यह समारोह उसी सामूहिक प्रयास का उत्कृष्ट उदाहरण है। और अंत में मैं हमारे नव प्रवेशित न्यायिक अधिकारियों को कहना चाहूंगा कि आज आप जिस शपथ को ग्रहण कर रहे हैं वह केवल पद की औपचारिकता नहीं
बल्कि समाज द्वारा न्यायपालिका पर रखे गए विश्वास की पवित्र जिम्मेदारी है। और आने वाले वर्षों में विधि के प्रावधान, संवैधानिक सिद्धांत और न्यायालयों द्वारा स्थापित नजीरें, पूर्व निर्णय आपके निर्णयों का मार्गदर्शन अवश्य करेंगी, किंतु अंततः आपकी सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और मानवीय संवेदनशीलता ही आपके न्यायिक जीवन की वास्तविक पहचान बनेगी। एक न्यायिक अधिकारी का दायित्व केवल कानून का यांत्रिक पालन करना नहीं होता है, बल्कि न्याय की उस मूल भावना को समझना भी होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, अधिकार और विश्वास निहित होते हैं। इसलिए आपके निर्णयों में विधिक ज्ञान के साथ साथ मानवीय करुणा और नैतिक दृढ़ता का समन्वय ही आपकी न्यायिक यात्रा का सार्थक और सम्मानित बनाएगी। संभव है आने वाले वर्षों में लंबी सुनवाइयां, विस्तृत प्रकरणों और न्यायिक दायित्वों के मध्य आप इस दिन को स्मरण करें, केवल एक उद्घाटन समारोह के रूप में नहीं, बल्कि उस क्षण के रूप में जब न्याय की गरिमा, दायित्व और विश्वास वास्तव में आपके अपने बन गए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ उपस्थित सारे हमारे अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबने यहाँ पधार कर इस समारोह को एक गरिमामय समारोह बनाया। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। Thank you, Your Lordship, for your eloquent address. I now request everyone to kindly rise for the national anthem. I now request all the honorable dignitaries